Uh, Today we are going to start with, I'll say, the first technical session on GST. Up till now, we did the things around GST. Today we are going to actually enter into GST. So what we need to understand is the definition. There are certain important definitions in a GST. That is what we need to understand first. Now, for that purpose, those definitions, what we are going to understand, are already there in the book which I'm going to provide you. But I thought that I could present it in a more better way than what has been given in the book. So for that, just tonight I just prepared one material so that we can have a more better understanding on this. So let's understand. Let me share a screen. The first and foremost definition that we need to understand or start understanding would be the definition of India. Why? Because the act would be applicable section 1. Section 1 जो होता है किसी भी एक्ट में, that would be name, short title, extent, commencement. Name, short title, extent, and commencement. It is like giving a birth to a baby. What would be its name? What would be its date of birth? In which family it born? And similarly, in case of taxes also, section 1 will talk about name, short title, that name and short title are one of the same, extent and commencement. So this section 1 will tell the name of that it would be CGST Act. There is no GST Act only. There would be either CGST Act, SGST Act, IGST Act, or UTGST Act. Getting it? Name. Extent. It extends to whole of India. Getting it? The date of commencement, 1st of July 2017. So the date we understood, the name has been given, that we understood. Extent, that is the meaning of India, because the law would be applicable in India. So we need to understand that what is the meaning of India. So far as the land mass of India is concerned, the whole land mass of India is covered in a GST. The whole land mass of India is covered within the purview of GST. There is no doubt about it. पूरा लैंड मास इंडिया में कवर होगा. और वो कहां पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 1 of the constitution. So article 1 of constitution which talks about the land mass of India, वहां तो GST applicable होता ही है. In addition to the land mass, India is also spreaded in a sea, because we are having sea border at major part of the country.
or you can say airspace also. Are you getting it? So horizontally, vertically, what is the meaning of India? Beyond the landmass is something we need to understand as a part of the definition. So when we are looking at the definition of India, the definition, as I told you, would be, first of all, whenever you are reading any definition, the first thing that you need to observe would be that whether the definition is an inclusive definition or the definition is exclusive, exhaustive. वो कहां से पता चलता है हमें? वो पता चलता है कि इंडिया के बाद क्या लिखा है. जब इंडिया के बाद या किसी डेफिनेशन के बाद टर्मिनोलॉजी यूज होती है means what it means? It means that they are very specific about what they are trying to define. So you don't apply your mind and consider whatever we are saying as India only as a part of India, nothing beyond it, nothing less than that, nothing more than that. So the definition is exhaustive definition. India includes ऐसे होता तो definition could be treated as an inclusive definition, which would be having a vast scope as compared to this exhaustive definition. So what they are saying here is India means the territory of India as referred in Article 1. Territory of India as referred in. So Article 1 is basically talking about the land mass of India. तो पहला जो चीज उन्होंने बताया, which I have though highlighted about an Article 1, is basically about the land mass. The territory of India as referred in Article 1 of the Constitution. वहां लैंड मास खत्म हो जाता है. अब हम उसके बाहर निकल रहे हैं. Comma, so that is the first part. It's territorial water, seabed, subsoil, underlying such water means such territorial water. देखो सच का मतलब क्या, फिर आगे जो हमने बोला उसकी बात होगी. तो ये सीबेड सबसॉइल के आगे क्या बोला हमने? टेरिटोरियल वाटर. सीबेड मतलब क्या, सबसॉइल मतलब क्या? पानी के नीचे वाली जमीन. पानी तो तुमने कवर कर लिया. पानी के नीचे वाली जमीन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ इंडिया. कहां तक? अप टू टेरिटोरियल वाटर. We'll understand what is the territorial water, but up to territorial water. Continental shelf, exclusive economic zone, or any other maritime zone as referred in Territorial Water, Continental Shelf, EEZ, and other Maritime Zone Act 1976, and the airspace above its territory and a territorial water. So this is also included. Please understand. Airspace above its territory and territorial. So basically, तीन चीजें कवर की. Land, water, and airspace. Land we understood. Airspace understand करने के लिए सबसे पहले हमें वो समझना पड़ेगा कि obviously इंडिया के ऊपर का जितना भी एयर स्पेस है, लैंड मास के ऊपर का जितना भी एयर स्पेस है, दैट वुड बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ इंडिया. व्हाट इज अ 12 nautical mile? First of all, because that 12 nautical mile would be territorial water of India from the baseline. So समुद्र में बेसलाइन से, बेसलाइन मतलब जहां पे समुद्र और लैंड मास एक दूसरे को टच करते हैं, वहां से 12 नॉटिकल माइल तक. इट इज नॉट किलोमीटर, इट इज नॉट माइल, दिस इज अ 12 नॉटिकल माइल.
In a water, the distance is measured in a nautical mile. So from the baseline up to 12 nautical mile, up to 12 nautical mile, it would be treated as Indian territorial water. It would be treated as Indian territorial water. Now, meaning thereby, whenever any foreign ship which is coming to India, the import actually did not start when the ship comes on the port. Import actually started when it actually entered into the territorial water, because the same definition is applicable even to the custom. Territorial water. क्या है territorial water? Up to 12 nautical mile from the baseline. ठीक है. But for the purpose of convenience, convenience to what extent? Convenience in the form of surveillance, convenience in the form of catching the smugglers. See, when I say that up to 12 nautical miles, it would be Indian territorial water. That means the custom department will go only up to the 12 nautical miles, not beyond that. तो जैसे 12 nautical mile खत्म हो गया, उसके आगे वो जाके किसी को पकड़ नहीं सकते. अगर कोई इंडिया से स्मगलिंग करके जा भी रहा है ना, तो उसको पकड़ नहीं सकते, या फिर आ रहा था और देख लिया और वापस जा रहा है तो भी उसको पकड़ नहीं सकते 12 nautical miles के beyond. Now that sound unreasonable. So therefore, the Indian custom water, another terminology, Indian custom water is even after this 12 nautical miles, दूसरे 12 nautical miles. तो अगर हम बेस लाइन से देखें ना, तो इंडियन कस्टम वाटर मींस इंडियन कस्टम ऑफिसर कहां तक सर्वेलेंस कर सकते हैं, would be 24 nautical miles. 24 nautical miles. बेस लाइन से 24 nautical miles तक कस्टम डिपार्टमेंट अपना सर्वेलेंस कर सकता है, किसी को भी पकड़ सकता है. सो 12 nautical mile तो अपना टेरिटोरियल वाटर है. उसके बाद जो 12 nautical mile है, that would be treated as custom water. अब ये Indian custom water is not which is a part of the definition. I'm just telling you for the purpose of your understanding. In addition to it, the seabed and subsoil of territorial water would also be treated as part of India. So up to 12 nautical mile, समुंदर तो है ही इंडिया का पार्ट, उसके नीचे की जो जमीन है, seabed, subsoil, that is also treated as part of India. Subsoil means when there is a creek area, where there is no actual water, दलदल जैसा है, that is a subsoil. In addition to it, there are two more words which has been used. The one is EEZ, exclusive economic zone, exclusive economic zone, and continental shelf. These two words we need to understand. And what is beyond it, that is also something that we need to understand. So when we are looking at this chart, no, if this is my baseline, this is my baseline, up to 12 nautical miles, it is a territorial, and anything above it is your, तो लैंड मास में तो है. सो अगर ये बेस लाइन से आगे वाला पानी है ना, तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सी, दैट इज एन इंटरनल वाटर. तो लैंड मास के ऊपर का एयर स्पेस एंड एयर स्पेस अप to 12 nautical mile will be treated as India. Beyond that, so far as air is concerned,
it would be international airspace. Fine. Our custom water was further extended to this line. Am I clear? Then there is a terminology called exclusive economic zone from baseline up to 200 nautical mile. From baseline up to 200 nautical miles, it is treated as exclusive economic zone for the respective country. Means in this area they have exclusive zones where they can do any economical activity. आप सोचो कि समुद्र में जाके क्या economical activity आप करोगे? That would be gas exploration, oil exploration, which is treated as exclusive economic zone attributable to the respective country. And these norms are not just the norms of India. This is universally accepted meanings we are discussing. Up to 200 nautical miles, it would be treated as exclusive economic zone. Beyond 200 nautical miles from the baseline is known as high sea. Beyond 200 nautical miles, it is known as high sea. This is not a part of any country. So I don't know whether you have heard this term or not, called in high sea sails. मतलब क्या? आप कोई goods import कर रहे हो, for example USA से. Goods आपके आ रहे हैं by way of ship, cargo. Goods इंडिया में एंटर हुए उससे पहले आपने वो गुड्स किसी को बेच दिए. ध्यान से समझना. ये इंडिया में आने के बाद अगर आप किसी को बेचते तो सबसे पहले तो लगता आप पे इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी. फिर आपने गुड्स लिया, फिर वापस से आप बेचते तो लगता जीएसटी. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? उसकी जगह पे आपने क्या किया? rather than clearing these goods from the port, you have sold these goods even before the ship enter into the territorial water. So when basically the ship was in a high sea, beyond the definition of India, no one is going to verify, to be very honest, no one is going to verify कि actually वो 200 nautical miles के बाहर था जब transaction हुआ तब. But basically before filing shipping bill, अगर हम practical way में देखें ना तो before filing bill of entry, not shipping bill, that is in case of export, before filing bill of entry. Bill of entry is a document that you are supposed to file to clear your goods from the port by way of payment of custom duty. तो जो तुम्हें डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है उसको बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री. सो अगर हम प्रैक्टिकल तरीके से देखें ना तो इफ यू आर सेलिंग योर गुड्स बिफोर फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री, दैट वुड बी ट्रीटेड एज एन हाई सी. बट उसका टेक्निकल वर्ड अगर हम समझे ना तो जब गुड्स इंडिया में एंटर हुए उससे पहले अगर आप ये गुड्स को बेच रहे हो, उससे पहले अगर आप गुड्स को बेच रहे हो तो that would be treated as an high sea, which is not subject to any tax, because tax can be levied within the territory of India. So for example, if you are purchasing goods from Hong Kong and supply it to USA, goods never comes to India, will it be subject to tax in India? Answer is no. Location of the supplier, place of supply, everything is outside India. समझ में आ रही है ना बात? तो similarly, any transaction which took place in this high sea is not subject to tax. So therefore, understanding that what is high sea, that is also important. What is high sea? Area beyond 200 nautical mile. Area beyond 200 nautical mile is treated as high sea. Is treated as high sea. Last terminology that we need to understand is in continental shelf. No, please understand. ये ना थोड़ा जियोग्राफिकल मीनिंग है इसका.
I don't know whether you know this or not. अभी जो सिचुएशन है ना वर्ल्ड की, स्पेसिफिकली लैंड मास की, मतलब इंडिया आपको यहां दिख रहा है कनेक्टेड विथ इन चाइना, that actually was not a scenario before certain lakh or crores of years before. अब सोच रहे होगे कि भाई, I don't know whether that thought comes in your mind or not, because I used to think in that way कि हिमालय इतना बड़ा कैसे इमर्ज हुआ होगा. It is not out of an earthquake. It is not an out of an earthquake. तो जितने बड़े पहाड़ी होती है ना, वो सारे अर्थक्वेक से नहीं होते, अर्थक्वेक से वोल्केनो होते हैं. वहां कोई वोल्केनो नहीं है, तो क्यों हुए हैं वो वहां पे? बिकॉज लैंड की जो प्लेट्स होती है, वो समझ रहे हो, एक दूसरे से जब टकराती है तो अब जगह नहीं है, फिर भी धक्का आ रहा है, तो क्या होगा? ऊपर जाएगा ना वो. सो द होल हिमालयन बाउंड्री is created in that way. What does it mean? अब थोड़ा डिस्कवरी चैनल चालू हो गया. That means India, what we are looking as in India, was not connected with this remaining part of the China earlier. वो अलग था, जैसे ऑस्ट्रेलिया अलग है ना अभी, वो छोटा है, ये बड़ा टुकड़ा था लैंड का. Because of geographical changes, ये जो धीरे 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 वो स्क्रैम्बल वाले गेम होता है ना, उस तरीके से आके यहाँ पे फिट हो. हेलो, तो ये जो टुकड़ा था, कॉन्टिनेंटल का टुकड़ा था, वो कितना बड़ा था? दैट बिलोंग्स टू दैट कंट्री. सी एवरी ईयर भले 1 सेंटीमीटर, लेकिन समुद्र नजदीक आ रहा है. आपने देखा होगा बहुत सारे, मतलब बॉम्बे में बहुत सारे एरिया जो है वो हमने लैंड को भी आगे समुद्र में लेके जा रहे हैं. नवी मुंबई इज मेजोरिटी इन दैट वे ओनली. सिमिलरली बहुत सारे आइलैंड ऐसे भी हैं जो कि गायब हो चुके हैं, पानी ने कवर कर लिया. तो पहले वो लैंड मास था, लेकिन बिकॉज ऑफ ग्लेशियर्स आर melting every day, that water is coming into the sea and the sea level is increasing every day. अभी ये तो साइंस हो गया ना, ये तो नहीं पढ़ना था. So that water is coming on a land mass every day, though in a millimeter or in a centimeter, but it is covering the land mass of the country. That actually of earlier was a land mass, continental shelf था वो, लेकिन क्योंकि ये वाटर लेवल ऊपर चला गया तो अंदर चला गया. ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है? वही पार्ट है कि कितना बड़ा लैंड मास का टुकड़ा पहले अलग था, जो कि यहाँ पे आके ज्वाइंट हुआ. दैट कुड बी इजीली आइडेंटिफाइबल साइंटिफिकली कि कहाँ दो लैंड प्लेट कनेक्टेड है. तो यहाँ जो हाईलाइट करके दिखाया ना उन्होंने कि भाई ये बड़ा एक टुकड़ा होगा और ये लेवल अलग था, ये लेवल एकदम अलग है, तो ये ऐसा जगह होगी जहां पे हम बोल सकते हैं कि ये मेरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होता होगा. तो दैट कुड गो बियॉन्ड इवन 200 नॉटिकल माइल्स. अगर नहीं जा रहा है तो 200 नॉटिकल माइल्स पे तो तुम मान ही सकते हो कि तुम्हारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है. These are not my definition. This is a definition coming out of this EEZ and Continental Shelf Maritime Zone Act 1976. वहां ये स्पेसिफाई किया हुआ है. Getting it? अब वहां पे भी तुम क्या कर सकते हो? पूरा ऑयल एक्सप्लोरेशन, गैस एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, which would be treated as a part of India. Please bear in mind. Which would be treated as a part of. Am I clear? And when we are saying it is a part of India for the purpose of GST, that means any activity done in this particular area and supplied to any other part of India will be subject to GST. So for example, यहाँ से exclusive economic zone EEZ में से कुछ oil exploration किया, then it has been supplied to the refinery. IPCL को चलो supply किया crude,
that would be subject to GST, because by way of definition of India in a GST, it is subject to tax because it is located in a taxable territory. That is why the terminology they are using everywhere is not just India. They are using a terminology called in taxable territory and non-taxable territory. अब ये टर्म तो बेसिकली इसलिए आया था क्योंकि जब जीएसटी आया 1 जुलाई को, तब इट वाज नॉट एप्लीकेबल इन जेएनके, उनको हफ्ते के बाद पता चला. तो अब तब मैं बोलूं इंडिया, इंडिया मीन्स वॉट एवर हैज बीन स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 1, तो आर्टिकल 1 ने तो जेएन को भी स्पेसिफाई किया हुआ एज अ पार्ट ऑफ इंडिया. अब जेएनके में तो हफ्ते के बाद एप्लीकेबल हुआ जीएसटी, तो आई कैन नॉट यूज द वर्ड दैट जीएसटी इज एप्लीकेबल इन इंडिया बाय वे ऑफ डेफिनेशन. So I have to come up with another terminology. So they come up with another terminology called taxable territory, non-taxable territory. Though it is a part of India, but tax would be levied only on taxable territory. Are you getting it? But the question always comes, which again we are going to understand when we are going to understand this IGST Act. कि अगर ये EEZ में से ऑयल एक्सप्लोरेशन किया, so it would be interstate or an intrastate, because when it comes to the definition of state, state never include, not a single state includes the water. हेलो, वाटर पुलिस देखी तुमने कभी क्या? वहां सर्वेलेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है. सो द टेरिटोरियल वाटर is a part of central government, not of any state. So it is not a part of any state. Please bear in mind, what we understood up till now was that interstate means transaction between two state, two union territory, state and union territory. This is not even union territory. This is not even a state. So anything which has been supplied from this territorial water or the EEZ to any other part of country, will it be inter or intra? That again further when you are going to understand the IGST Act, no, there is section 9 which clarifies about this. So उस टाइम पे हम इसको better understand करेंगे. अभी सिर्फ समझना है definition of India, that India includes the territory as per Article 1 of the Constitution, territorial water, which is a 12 nautical mile, seabed, subsoil of such territorial water, EEZ, continental shelf, and airspace of landmass and territorial water. Am I clear on this? Confirm 100%. अब जब तक ये नहीं समझोगे तब तक समझ में नहीं आएगा एक्ट कहां पे लगता है. Clear? So that was the first definition of an India that you must understand. The second definition which I want you people to understand was the definition of person. Why we need to understand the definition of person? For that, I just want you to first of all come on this. Yes. So this is basically the Darwin's theory of evolution. Whenever they are making an act applicable, तो उन्होंने तो पहले तो एरिया डिफाइन किया कि ये कहां एप्लीकेबल होगा. उसके बाद उनको वो भी डिफाइन करना पड़ेगा ना ये किससे एप्लीकेबल होगा, बिकॉज सप्लाई की जिस हिसाब से डेफिनेशन उन्होंने की है उस हिसाब से किससे एप्लीकेबल होगा वो भी डिफाइन करना बहुत ही जरूरी है. क्यों? क्योंकि सप्लाई इंक्लूड सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंसिंग, लीजिंग, रेंटिंग और इवन अ डिस्पोजल. एंड if they are not defining a person, please bear in mind, that means whomsoever is a supplier, that term is very easy to understand. Who is a supplier? Anyone who supplies is a supplier, is liable to pay GST. तो आप सोचोगे सर वहां कहां ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत है.
मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, वहां पे मुझे आप बोलो कि यहाँ सप्लायर है या नहीं है. काउ इज गिविंग अ मिल्क. काउ सप्लायर है या नहीं है डेफिनेशन के हिसाब से? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज. है सप्लायर कि नहीं है काउ? हाँ, दिया ना, ट्रांसफर तो किया ना खुद से. ट्रीज आर गिविंग फ्रूट्स लाइक वेजिटेबल्स, wood, leaves. Now, do you want to make GST applicable to them also? I'm just talking about living things, and the trees are a part of living things. Please understand. Even when we are looking at the definition of person, that also includes certain non-living things. Hello, like partnership firm, company, AOP, are not living things. It's created by living. So therefore, we need to again identify that it is not that we are charging this tax on everyone whomsoever supply. We are trying to restrict the definition by way of defining what is the meaning of person. So that is a wider scope. कि भाई इन लोगों को हम जीएसटी एप्लीकेबल कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई किया? पर्सन को. लेकिन एवरी पर्सन इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, ओनली दोज पर्सन हु बिकम्स अ सप्लायर. गेटिंग इट नो? तो आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट करना होगा. ये सारे डेफिनेशंस आर रिलेटिंग टू पर्सन्स ओनली, बट अलग अलग फॉर्म है पर्सन के. तो पहला जो फॉर्म है विच इज अ वेरी बेसिक थिंग, जिससे कि बाकी सारे इमर्ज हुए, इवेल्युएट हुए. इवोल्यूशन वहां से हुआ है. कहां से? पर्सन से. क्यों? क्योंकि जब तुम सप्लायर का डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तो सप्लायर का डेफिनेशन होगा द पर्सन हु सप्लाई. That means you need to first go to the definition of what is the meaning of person. Hello. Then there is a further transformation of the supplier into the taxable person. That who would be treated as taxable person. Taxable person क्यों? क्योंकि जीएसटी में सिर्फ सप्लायर जीएसटी पे नहीं करता है. हमें पता है कि देयर इज अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आल्सो, जहां पे रिसिपिएंट जीएसटी पे करता है. तो अगर हम ऐसा बोलेंगे दैट हु इज लायबल टू पे जीएसटी इज अ सप्लायर, तो आंसर होगा गलत. इट वुड बी सप्लायर as well as in some cases recipient also. And when the recipient is paying, supplier will not pay. Both will not pay, no? So therefore, now we are actually trying to make act applicable, or we are creating a responsibility on a person to pay tax. Now that definition again cannot be restricted only to the supplier. So therefore, they come up with a new terminology called a taxable person, means any person who is registered or liable to be registered, because tax can be paid only after that. And your liability to register also triggers when you are supplying beyond threshold limit, or when you are receiving certain specified goods or services and you are liable to pay the reverse charge. Your liability to registration will trigger, and once the liability for registration will trigger, you are liable to pay GST. So who is a taxable person? Taxable person means the person who is registered or even liable to be registered. Please bear in mind the definition is very crucial. So taxable person का definition देने का पर्पस क्या है? कुछ बेनिफिट देने का पर्पस नहीं है taxable person को डिफाइन करना. taxable person क्यों डिफाइन कर रहे हैं हम? We are trying to make someone responsible for making a payment of tax. It is not for your benefit. It is for the benefit of government. We are trying to identify the person who is liable to pay tax. Who is liable to pay tax? The person who is not a supplier. The person who is not a receiver. Alag definition pura. The person who is registered.
सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए. Now your registration requirement may trigger, देखो, your registration requirement in a GST may trigger on crossing certain threshold limit of an outward supply, or it may even trigger when you are receiving certain goods or services which are notified under section 9 under reverse charge mechanism, where as a recipient you are liable to pay. So in whatever could be the situation, whenever you are liable to pay, the first step start not with payment, the first step start with registration if you are not having. Hello. And again, they have played very smartly. So taxable person means not the person who is registered. Taxable person even includes the person who is liable for registration. So if you are not taking registration, that will not work as a shelter to you for not paying tax. Are you getting? You can't say that I am not registered, so I will not pay. If you become a taxable person, you are supposed to pay. Liable for registration under section 22 or section 24. Section 22 is about fulfilling of certain requirement. If you are fulfilling those requirements, then you are liable for registration. If you are not fulfilling, you are not supposed to pay, not supposed to register. That is a section 22. So basic threshold limit जो आता है ना हमारा 20 लाख वाला 40 लाख वाला, that is coming out of section 22. 24 on the other hand is a compulsory registration. So meaning thereby, for those transactions which are specified under section 24, if you fulfill any of the transaction, then irrespective of your turnover, even though your turnover is 0, still you are liable to register. Are you getting it? Sure. So that is the definition of taxable person. We'll go through the definition also. मैं जो बोल रहा हूँ वही है. और फिर उसका भी अपग्रेडेड एक वर्जन लेके आए. अब ये क्यों लेके आए? रजिस्टर्ड पर्सन. तो देखो, रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. दैट मींस द पर्सन हु इज अप्लाइड एंड गॉट अ रजिस्ट्रेशन. तो इसको डिफाइन करने की जरूरत क्या है? बहुत स्मार्ट प्ले किया गवर्नमेंट ने. When it comes to assigning a responsibility for payment of tax, when it comes to making someone responsible for payment of tax, they come up with a terminology called a taxable person, and this taxable person includes not just a person who is registered, but also includes the person who is understood. So made someone responsible for payment of tax. So not having registration is not going to help you. So जब responsibility देने की बात आई तब registered और liable to register दोनों को लाए. लेकिन जब benefit देने की बात आएगी GST के, आप सोचोगे GST का benefit क्या? ITC, refund. हेलो, तो refund आप कब मिलेगा? Only and only if you are registered. So आप जब refund या फिर ITC section 16 के बाद provision देखोगे ना, वहां सब जगह पे क्या लिखा हुआ है? That the registered person can avail an ITC. वहां नहीं लिखा है कि supplier, वहां नहीं लिखा है person, वहां नहीं लिखा है taxable person. अब समझ रहे हो? So if you are liable to pay tax, situation जरा समझो. If you are liable to pay tax and if you are not taken registration, that means they can still force you to collect tax from you because you are liable for registration. And when they are coming to you and asking for the payment of GST, when you are saying that I am not registered, they will say that please read definition of taxable person. You are liable to pay. And when then you are arguing, okay, fine, I'll pay, but I also have an ITC. Then say no. Again, read the definition of registered person. So you can have the benefit of ITC only after getting registration, not before that. So end up paying everything in cash, and that ITC is gone then. Are you getting? So this is how it seems to me that this is a kind of an Darwin's theory, which start with a person, further refinement into a supplier, further refinement into a taxable person,
and further refinement ultimately into the registered person. Getting it? That was the reason why we need to understand all this definition. So let's again go back to the definition of person. Almost everything has been covered other than animals and the trees. Everything has been covered. ये दोनों छोड़ के समझ रहे हो ना? The definition is there under section 2 subsection 86. जहां सिर्फ मैंने ये section 286 लिखा है, that means 286 of CGST Act 2017. There are some additional definitions which are there in IGST Act. वहां मैं specifically लिखूंगा that this is a definition which is coming out of an IGST Act, not defined in CGST Act, because there is something relating to interstate transaction. Am I clear? Yes. So when we are understanding the definition of person, अब देखो definition means है क्या? So whatever you understand as a person is a person, but it includes this. तो ये तो होनी ही चाहिए आपके assumption में. So person includes an individual, HUF, company, firm, LLP, association of person or body of individual, whether incorporated or not in India or even in outside India, any corporation established by under any center act, state act, provincial act or government company defined under the clause 45 of the section 2 of the Companies Act. Then any body corporate, incorporated by or under any law for the timing in force in the country or outside India, cooperative societies, local authorities, even a government. Government or the state government, society, trust, every artificial judicial person not falling within any of the above. मतलब पूरा cover. ये definition तुम्हें पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर पूछते भी हैं तो भी तुम्हें जितने फॉर्म ऑफ बिजनेसेस पता है सारे लिख देने, स्टार्टिंग विथ एन इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, LLP, AOP, BOI, एनी बॉडी एस्टैब्लिश, मतलब जो ICAI है हमारा, that is also within the definition of person. Getting? Local authority, trust, central government, state government, or any other artificial judicial person not specified anywhere. बचा क्या? मैं जो बोला वही बचा ना? Trees and animals. Because they could become a supplier. That is why I am saying. They could become a supplier. But they are not within the definition of person. Getting it? So ये है definition person का. यहाँ को technical नहीं है. Technical क्या था कि कैसे person से supplier, supplier से textile person से register person हो रहा है, वो larger scale में understand करना बहुत जरूरी है. उसके बाद जो definition आती है वो हम जैसे understand किए is the definition of. अब देखेंगे ना, supplier in relation to any goods or a services or both shall means, तो supplier सबसे पहले क्या होना चाहिए? तभी वो supplier बन पाएगा. Means the person supplying the said goods or a services or both, and shall even includes its agent. Agent means the person who is working on behalf of someone. So there is a principal and there is an agent. वो principal agent वाला concept है यहाँ पे, जहाँ पे agent is working on the behalf of its principal. He has a right of representation. So whether the supply has been made directly by the principal supplier or by an agent, in both the cases,
principal supplier would be treated as a supplier. Am I clear? Confirm? So that is a simple definition of what is the meaning of supplier. Along with this, we also need to understand that what is the meaning of recipient. Because in case of reverse charge mechanism, the liability has been casted on the recipient. Recipient पे responsibility डाली गई है ना, तो हमें understand करना पड़ेगा that who would be treated as a recipient, who would be treated as a recipient. So in our case, identify करना that who is a supplier is easy. I would be a supplier of the service, coaching services to you. Who is the recipient? Who is the recipient? Tell me, who is the recipient? Very simple. कौन है recipient? That is where we need to read the definition. Please bear in mind. अगर मैं राघव को लेके बाल कटाने जा रहा हूं, supplier is that barber. Who is the recipient? That is where you are wrong. When the consideration is payable, the person who pays is a recipient. जरूरी नहीं है ना हर बार कि मैंने पैसे दिए मेरे को बाल कटाने पड़ेंगे. अरे बट आई वॉन्ट समवन टू परफॉर्म. नो, क्या गलत हो जाएगा? सो व्हाट? तो बिजनेस चेन कैसे चलेगा? If I have supplied certain goods, for example, I have supplied this air condition to someone. I am in the business of supplying of an air condition on which I have given a guarantee. हेलो, हाँ, अब 3 साल का मैंने गारंटी दिया था, अभी 1.5 साल के बाद कुछ प्रॉब्लम आया तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आपने मुझे गारंटी दिया था, अभी भेजो इंजीनियर मेरे पास है नहीं. आई एम हायरिंग समवन टू गो एंड प्रोवाइड दैट सर्विसेज टू. तो रिसिपिएंट वो है क्या? द पर्सन हु पेज. हेलो, ही हैज प्रोवाइडेड सर्विसेज टू हिम और टू मी. LIC agent has provided services to you or LIC company. Why you are not beneficial? That is where you need to understand that whenever there is a consideration, so consideration has a direct nexus. क्योंकि पैसा बंदा कब पे कर रहा है? जब उसको कुछ मिल रहा है ना, तो उसको मिल रहा है, that means he is a recipient. So whenever the consideration is payable, the person who pays. I want my employee to travel to USA. कौन बैठेगा प्लेन में? Who is the recipient? Company. Are you getting it? I want Irfan to go to Ahmedabad for appearing in some of my case, for which I have hired a cab. कैब किसके नाम का इनवॉइस बनाएगा? इरफान के नाम का बनाएगा क्या? Who is the recipient? ASMN company. Though actual enjoyment is being done by someone else, but I want that. जरूरी नहीं है ना मेरे को बैठना पड़े. Are you getting what I'm saying? You need to change your thought process when it comes to the taxation. So who is the recipient? The person who pays. If there is a consideration. If there is no consideration, no, then you think about who is actually receiving it. Because the transaction, even without consideration, transactions even without consideration has been defined as a supply under section 7, which could be subject to GST even without consideration. For example, there is a branch transfer which is happening. We understood that the branch transfer could be subject to tax. If I'm supplying my goods from one branch to another branch, will it be subject to tax or not? Yes. If my one branch is located in Gujarat, another branch is located in Maharashtra, if I'm supplying my goods from Gujarat branch to Maharashtra branch, will it be subject to GST or not? Yes. Payment करेगा क्या वो एक branch दूसरे branch में? एक ही तो बैंक account है. So there is no consideration in this. Still a transaction making taxable. तो फिर भी तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा who is the supplier, who is the recipient. Are you getting it? So in those cases you need to identify
Okay, fine. In this case, there is no consideration, and there could be a tax liability on this because of section 7 schedules. तो वहां मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हु इज अ सप्लायर, हु इज अ रिसिपिएंट. क्यों आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? पहले मैं रिसिपिएंट आइडेंटिफाई करूंगा, फिर देखूंगा व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, एंड अकॉर्डिंगली आई विल डिसाइड दैट व्हाट टैक्स आई एम सपोज्ड टू चार्ज, C plus S और I. लार्जर पिक्चर देखो, छोटा छोटी चीजें मत देखो, डेफिनेशन मत देखो, क्यों डिफाइन किया है वो देखो, ऑटोमेटिक डेफिनेशन फिर समझ में आएगा. अभी जैसे आप बोल रहे हो कि जो बंदा एंजॉय करता है रेसिपिएंट वही होना चाहिए हर बार, तो वहां तुम्हारी आईटीसी चेन टूटेगी. गेटिंग इट? वहां तुम्हारी आईटीसी चेन टूटेगी ही टूटेगी. क्योंकि अगर मैं मेरे एम्प्लॉय को ट्रैवल करके भेज रहा हूं यूएस से कुछ काम से, तो अगर आईटीसी इरफान को मिल रही है ना, तो एएसएम चेन टूट गई, इरफान नॉट रजिस्टर्ड, तो तुम्हारा ये जो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्रेडिट कॉन्सेप्ट था ना, वो वहीं मर गया. अब कंसिडरेशन नहीं है और जीएसटी वो लगा रहा है, तो वैसे भी तुम्हें आईटीसी नहीं मिलेगी क्योंकि तुमने टैक्स का पैसा पे नहीं किया है. हेलो, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? वो लार्जर स्केल में देखो तुम, अगर कंसिडरेशन होगा किसी ट्रांजैक्शन में तो वो होगा वैल्यू प्लस टैक्स टोटल, एंड टोटल यू विल कलेक्ट फ्रॉम समवन. इफ द कंसिडरेशन ही नहीं है तो रिसिपिएंट तुम्हें टैक्स का पैसा देगा क्या? हेलो, इफ आई डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम माय अनदर ब्रांच, दैट मीन्स आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग, जीरो. तो टैक्स का पैसा देगा क्या? कि नहीं, तूने टैक्स तो पे किया ना, आई गिव यू दिस. टैक्स का पैसा भी नहीं देगा वो. तो वहां तुम्हारी आईटीसी की चेन टूट सकती है. हाँ, specifically for branch transfer there's an exception in an ITC provision के recipient can still avail a credit even though he has not paid. ब्रांच ट्रांसफर के लिए रखा है, लेकिन वहां पे भी रीजन क्या है? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्रेडिट हो उसलिए. नॉर्मल केस में अदर देन ब्रांच ट्रांसफर, अगर कंसिडरेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल कंसिडरेशन अगर नहीं है, तो सामने वाला क्रेडिट भी कैसे लेगा? कि क्रेडिट की क्या क्रेडिट मिलती है तुम्हें? तुमने जो टैक्स का पैसा पे किया उसकी क्रेडिट मिलती है ना. अभी तुमने टैक्स का पैसा ही पे नहीं किया तो क्रेडिट मांगते सिर्फ नहीं है, ठीक है तुम्हें? हेलो, getting it? And that is where again, if you're keeping all this thing in your mind, no, I can bet you that you are not supposed to cram a single thing. You can define in your own way. फिर पर्सन का डेफिनेशन भले कितना भी लंबा हो, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली सिर्फ दो चीजें हम समझे ना कि हाँ एनिमल्स और ट्रीज नहीं है इंक्लूड, बाकी सारे हैं, तो अब दौड़ाओ तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हें कितने फॉर्म ऑफ बिजनेस पता है, लिखो. आई कैन बेट यू वो सारे होंगे. अब उसमें जरूरी नहीं है वही सीक्वेंस हो, तो तुम्हें डिफाइन करना है ना क्या है, तुम डिफाइन करना है. दिस आर द थिंग्स इंक्लूडेड. अब इसके बाद ही ये इंक्लूड होता है ऐसा नहीं है, एंड आफ्टर दिस ऐसा नहीं लिखा है डेफिनेशन में ना. They're very specific. This. आफ्टर वाला भी कॉन्सेप्ट होता है, इसके बाद ही आना चाहिए, इसके बाद ही आना चाहिए. समझे? तो वो है कॉन्सेप्ट कहां पे? पर्सन टू सप्लायर, सप्लायर टू टैक्सेबल, वो सीक्वेंस में है. लेकिन विद इन द पर्सन देयर इज नो सीक्वेंस. हेलो, अब जब लॉकी में बात करना तो इतना स्पेसिफिक होना है तुम्हें. सो अगर अभी हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ द रेसिपिएंट, तो has been split into 3 categories, A, B and C. A is talking about when the consideration is payable, B and C is talking about when the consideration is not payable. फॉर्मुलेट करो थोड़ा दिमाग में, चार्ट फॉर्म में, इजी रहेगा. 293 recipient, on one hand there is A, on other hand there is a B and C. So B and C again further split into B and C. What is A? When the consideration is payable. What is B? When the consideration is not payable, and supply of goods. What is C? When the consideration is not payable, supply of, because in both the cases recipient would be different. मैंने एक ही मर्ज कर देते हो.
बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट नेचर. अगर कंसिडरेशन है तो नेचर तेल लेने गया, जो बंदा पे कर रहा है वही है रिसिपेंट. किसको मिल रहा है, कहां गया, वो कोई लेना देना नहीं. Are you getting it? So now, by keeping this thing in mind, let's see what is the definition of the recipient. Recipient, section 2, subsection 93. अगर एग्जाम में याद नहीं रहता है तो सिर्फ सेक्शन 2 लिखो, चलेगा. इंटर में कोई ऐसा दिक्कत नहीं. हाँ, लेकिन ये मैंने बोला इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, तो इसके अगर याद रहते हैं तो अच्छा है तुम्हारे लिए. सेक्शन 2, सबसेक्शन 93, रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. मेरी तो ये हैबिट है, पहले देखता हूँ ये क्या मीन्स वाला है या इंक्लूसिव वाला है. मीन्स where a consideration is payable, so I have, that is the reason highlighted it separately. Where a consideration is payable for the supply of goods or a services or both, तो यहां पे आप देखोगे दोनों आ चुके हैं. Who is the recipient? The person who is liable to pay that consideration is the recipient. अब ये recipient definition हम क्यों अंडरस्टैंड कर रहे हैं? क्योंकि ITC नहीं देनी है मुझे, क्योंकि in many transaction a recipient would be liable to pay GST under reverse charge mechanism. तो जब reverse charge mechanism आएगा section 9495 में, तो वहां लिखा हुआ है that recipient is liable to pay. So we need to identify who is the recipient. Supplier हमने understand किया, the one who supplies. लेकिन recipient का उतना easy नहीं है, the one who receives. तो वहां मुझे देखना पड़ेगा कि recipient कौन है एक्चुअली. फॉर एग्जाम्पल अभी एयर ट्रैवल रिवर्स चार्ज में होता है तो इरफान पे करता क्या जीएसटी उस पे. रेंट कैब रिवर्स चार्ज में है तो इरफान पे करेगा क्या जीएसटी उस पे. नो, द पर्सन हु इज पेइंग टू हुम, नॉट टू इरफान, टू दिस कैब कंपनी, टू दिस एयरलाइन इंडस्ट्री, इफ दैट इज इन अ रिवर्स चार्ज. दैट इज द रीजन यू आर मेकिंग समवन रिस्पांसिबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स. द रिसिपिएंट इसलिए डिफाइन किया है. हेलो, एक ये पर्पस है. दूसरा पर्पस है आईटीसी का भी, कि रिसिपिएंट प्लस रजिस्टर्ड अवेल इन आईटीसी. Am I clear? So where a consideration is payable, the person who is liable to pay that consideration. देखो एक्चुअल पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है, that is also not relevant. The person who paid नहीं लिखा है. अगर ऐसा लिखा होता ना तो लेवी ऑफ जीएसटी विल अराइज ओनली आफ्टर पेमेंट. समझो कितना लंबा सोचा है. They want to make a transaction taxable even though the consideration is yet not paid, but he is liable to be paid. The person who has paid ऐसा नहीं लिखा है. क्या लिखा है? Liable to pay. So whenever you are liable to pay, it's okay, but you are supposed to pay GST right now because you become a recipient. The transaction is subject to GST. अब when you are liable to pay tax, that is a question of time of supply. ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी ना. कौन सा टैक्स लगेगा, कब टैक्स लगेगा, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है, कब मैं टैक्स पे करूंगा. तो कब आप टैक्स पे करोगे ना, that is depending upon the principles of time of supply. प्रिंसिपल ऑफ टाइम, तो वो तब समझेंगे. अभी देखो कितना ब्रॉडली सोचा है, सिर्फ उतना ही कि जब तुम टाइम ऑफ सप्लाई देखोगे ना, तब रिसिपिएंट की वजह से तुम्हारी टैक्स का लेवी डिले ना हो. वही पर्पस है यहाँ पे. क्योंकि रिसिपिएंट इज नॉट द पर्सन हु हैज पेड, रिसिपिएंट इवन इंक्लूड द पर्सन हु इज लायबल टू पे. अब लायबल टू पे हो तुम, तो अगर तुमने लाइफ लॉन्ग पे नहीं किया ब्रांच ट्रांसफर, तो फिर तुम रिसिपिएंट बन ही नहीं पाओगे. अगर तुम रिसिपिएंट ही नहीं बन पाए तो लेवी ही नहीं लगेगी ना. समझ रहे हो? अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई बन नहीं पाया, ट्रांजैक्शन है लेकिन सप्लाई नहीं बन पाया, तो जीएसटी लगेगा क्या उस पे? आंसर इज नो. अगर कोई मटेरियल, आर्टिकल, सब्सटेंस, गुड्स नहीं बन पाया तो जीएसटी लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि सप्लाई पे नहीं लग रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स पे लग रहा है. तो सिमिलरली, प्लीज अंडरस्टैंड, सिमिलरली टैक्सेबल इवेंट के साथ साथ तुम्हें वो भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टैक्स कौन पे करेगा, वरना तो टैक्स का लेवी पॉसिबल ही नहीं है ना. दिस इज नॉट माय वर्डिंग्स, दिस इज
something Supreme Court has said, that you cannot just make the provisions of the law. You have to come up with the provision of how to discharge it, how to pay it. Now that includes how to discharge, how to pay, to identify who will pay. Just by making the provisions of the GST law, you cannot make anyone responsible if you are not specifying the provision about how to pay. तो 4 हफ्ते पे लाल लाइट हो तो खड़े रहना है, नहीं खड़े रहे तो ऐसा करके छोड़ नहीं सकते एक्ट. या फिर सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते कि रेड लाइट पे तुम क्रॉस नहीं कर सकते हो. अगर किया चलो क्रॉस फिर भी तो क्या, वो नहीं लिखा है. That won't work in that way, no? So when they are saying that you are supposed to be GST to the supply of goods or services, वहां छोड़ नहीं सकते उसको. They have to identify who will discharge, how he will discharge, where he will discharge. Otherwise, levy will fail. And these are not my wordings. This is identified by Supreme Court. That if you are not specifying how to discharge, how the citizen will understand it. So that is where again the definition of the recipient plays a very crucial role, because it is coming with a reverse charge mechanism. The law is in certain areas coming with a reverse charge mechanism where the recipient is liable to pay. So when the consideration is payable, the person who is liable to pay is the recipient, and if you are recipient, then only reverse charge will come. So if you are not recipient, reverse charge even cannot come to you. अब सोचो कि सिर्फ लिखा होता पेड और तुमने पे नहीं किया होता तो तुम रेसिपिएंट बनते. रेसिपिएंट अगर तुम नहीं बनते तो तुम्हारा कोई उखाड़ नहीं लेता कुछ जीएसटी में. वो आके बोलता पे करो जीएसटी, बोला रेसिपिएंट की डेफिनेशन पढ़ो. द वन हु इज पेड, आई हैव नॉट पेड. क्यों पे नहीं किया? दैट इज नॉट योर लुकआउट. Are you getting it? And when the consideration is not paid, so there is no consideration first of all, and there is a supply of goods, then who is the recipient? Consideration है ही नहीं, तो अब ये पेमेंट मैकेनिज्म तो फेल हो जाएगा. Consideration payable comes with a contractual obligation. अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि consideration is not payable, then you are not in A, then you are in B or in a C. So when the consideration is not payable, the person to whom goods were delivered or made available, or to whom the possession or use of goods is given or made available. Basically, जिसको तुमने goods दिए वो होगा recipient in case of goods. In case of services, if again there is no consideration, the person to whom services are rendered. So if there is no consideration to the barber, then yes, Raga would be the recipient. Are you getting what I'm saying? Sure. And any reference to the person to whom the supply is made shall be construed as referred to the recipient of the supplier and shall even includes an agent. तो जैसे supplier में भी agent था, वैसे recipient में भी agent हो सकता है. So अगर कुछ service मेरे agent को मिली, that would be then deemed that मुझे मिली, because I have authorized him to receive either goods or a service, whatever it could be. So जो नीचे वाला paragraph है, that is only for an agent. That if your services are being received by your agent or goods are being received by your agent, then it will be deemed that you have received it, because he was representing you only. He was representing you only. Am I clear on this? Fine. So that was the definition of the recipient, and then there are remaining two definitions that we need to understand. The first one is taxable person, 107, 94 registered person. अल्फाबेटिकली होता है, इसलिए लॉजिकल होता तो रजिस्टर्ड पर्सन सबसे लास्ट में आता, क्योंकि डेफिनेशन होती है अल्फाबेटिकली. सो टी कम्स आफ्टर आर. सो देयरफॉर टैक्सेबल पर्सन इज 107, रजिस्टर्ड पर्सन इज 94. हु इज द टैक्सेबल पर्सन? टैक्सेबल पर्सन मींस अगेन सप्लायर नहीं,
क्यों? क्योंकि लायबिलिटी टू पे इवन अराइज टू द रिसिपिएंट. Therefore, person means a person who is registered or under section 22 or 24. These are the normal conditions. This is the compulsory registration requirement. And trust me, you are not supposed to claim any of this. तुम्हें क्या लगता है ये रट्टा मार के मेरे से भी होता नहीं होता ना? रट्टा मार के तो पॉसिबल ही नहीं ये चीज है. Unless until you digest, understand, you need to understand how our brain function. Our brain function only in a logical way. मीन्स अगर तुमने लॉजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया तो कभी भूलोगे नहीं, तो तुम्हारी वो जाएगा हार्ड डिस्क में. अगर तुम रट्टा मारते हो ना तो दैट विल बी इन योर रैम. फिर जब वो तुम क्लियर करोगे रैम तुम्हारी, रैम इज द कैश मेमोरी ना, वो परमानेंट मेमोरी नहीं है तुम्हारी, टेम्पररी मेमोरी है. इसको परमानेंट में लेके जाना है. कैसे लेके जाना है? आज यहाँ पे पढ़ा, सुना, अच्छा लगा सुनने में, लॉजिकल रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ, फिर घर पे जाके पढ़ो, खुद समरी बनाओ. तुम्हें क्या लगता है ये डेफिनेशंस मेरे पास नहीं है क्या? ये डेफिनेशंस पूरी है मेरे पास सारी. सीधा मैं टेक्स्टमेन से डाउनलोड करता, ये रहे देखो डेफिनेशंस पूरी टेक्स्टमेन से. मेरे पास तो है सब्सक्रिप्शन उसका, ये रही पूरी डेफिनेशंस. मैंने वापस से क्यों लिखी है सारी? ये सारी डेफिनेशन है पूरी, सारी डेफिनेशन आ गई इसमें. वापस से मैंने आइडेंटिफाई करके क्यों लिखी? क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो ही जो अंदर के वो जो कनेक्ट करने हैं ना तार दिमाग के, तो तभी होंगे जब खुद करो. अब 10 साल के बाद, 11 साल के बाद, 12 साल के बाद अगर मुझे करने पड़ते हैं तो तुम पहली बार पढ़ रहे हो. अभी ऐसा लगेगा टाइम बिंग, लेक्चर खत्म होने तक आई अंडरस्टूड. फिर धीरे धीरे वो इवोपरेट होता है. वो ना हो इसलिए सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी ऐसा कोई नहीं होता ना. आपको क्या लगता है अभी जितने ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या जितने यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई भी एक बंदा होगा कि जो मैंने आज एक्सप्लेन किया या मैं पूरे 4 महीने में जो एक्सप्लेन करूंगा उसमें एक भी चीज ऐसी होगी जो तुम्हें समझ में ना आई? ऐसा कुछ होगा ही नहीं कभी कि जो तुम्हें समझ में ही ना आया. फिर भी रिजल्ट क्यों आता है किसी का पास किसी का फेल? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. जिसका पास हो मतलब उसने फिर सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ स्टडी, सेल्फ कंक्लूजन किए. जिसने नहीं किए वो लोग फेल होते हैं फिर. बाकी ऐसा तो है नहीं कि मैं जिसका रैंक आया था ऑल इंडिया 5th, ऑल इंडिया 10th, उसके कान में जाके कुछ सीक्रेट बताता था, बाकी को नहीं बोलता था मैं. ऐसा तो था नहीं ना, ऐसा है भी नहीं. तो जब क्लास में बैठा ना तो पूरा सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरा कंसंट्रेशन मैं जो बोल रहा हूं वही होना चाहिए. और मेरे को पता है ये बहुत ही बढ़िया फीलिंग है जब कुछ नया कॉन्सेप्ट दिमाग में जाए और समझ में आए ना, तो दैट सेटिस्फेक्शन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. वहां तालियां नहीं बजती, लोग शांत होते हैं. तो जब भी मैं सेमिनार लेने जाता हूँ ना तो ये मेरा एवेल्यूएशन है. तालियां बजती है ना, दैट आई अंडरस्टैंड कि कुछ गड़बड़ है. जब लोग साइलेंट हो जाए पूरे, दैट मीन्स नाउ आई रीच टू देयर ब्रेन. तो उतना डीपली, जितना डीपली मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ सोचने के लिए, उतना डीपली जाओ. अभी मैं उतना डीपली लेके जा नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि और आगे बढ़ते जाऊंगा मैं. तो तुम्हें भले स्क्रोलिंग करके आओ, चल के आओ, दौड़ के आओ, लेकिन चलते रहना है, चलते रहना है. अगर लग रहा है कि आज स्क्रोलिंग हुआ है ना तो कल पढ़ के आओ आज जो मैंने किया है, क्योंकि ये डेफिनेशन पूरे जीएसटी में आएगी. ऐसा नहीं है कि चैप्टर खत्म हो गया. डेफिनेशन होती है इसलिए ना कि आगे जाके कभी भी मैं बोलूं सप्लायर, तो सप्लायर व्हाट वी अंडरस्टूड. कभी भी मैं यूज करूं टर्मिनोलॉजी, कहीं पे भी लॉ में लिखा हो टैक्सेबल पर्सन, दैट मींस व्हाट वी रीड अंडर दिस 107. अरे गेटिंग इट? जितना वो ज्यादा करोगे उतना लॉजिक क्लियर होगा. वरना आईटीसी में रजिस्टर्ड पर्सन लिखा है, वो जब तक तुम टैक्सेबल पर्सन वो से रजिस्टर्ड पर्सन ना करो समझ में नहीं आता कि ये डिफाइन क्यों किया. समझ रहे हो?
वो चीज मैं 6 बार पढ़ के, मेरे को किसी ने नहीं पढ़ाया था, 6 बार पढ़ के मैंने जो कंक्लूड किया वो तुम्हें पहले ही लेक्चर में ही बता दे रहा हूँ कि ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, इसका पर्पज ये है, इसका पर्पज ये है। अब फिर भी तुम कुछ ना करो ना, तो दैट वुड बी स्टूपिडिटी। बहुत बार में लगता है ना ऐसा कि आई एम स्मार्ट, मेरे को एक बार सुनने से अच्छा लगा, समझ में आ गया। यू आर नॉट स्मार्ट देन, यू आर एक्चुअली स्टूपिड। इफ यू आर स्मार्ट और आपको लगता है कि 60 आ जाएंगे सुनने से, तो मेहनत करते तो 90 भी आते, और फिर भी तुम नहीं लाए। नाउ दिस इज योर कंक्लूडिंग फेज ऑफ एन एजुकेशनल कैरियर। आई डोंट केयर हाउ यू बिगिन at your school level, at your BCom level. I don't care with it. Now, whether you are a rank holder, irrespective whether foundation, whether it's BCom, I don't care. Or whether you are an average performer. Now what? That matters. Now what in inter? Now what in a final? Now what? और समझो ये किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तुम। अगर तुम्हें ये डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो बाहर निकल के सीए में बनने के बाद आप सोचो, फाउंडेशन से इंटर डिफिकल्ट, इंटर से फाइनल डिफिकल्ट, फाइनल से लाइफ डिफिकल्ट। ये फेज पास करके तुम आगे बढ़ रहे हो। हम सोचते हैं फाइनल पास करने के बाद अब कुछ नहीं करना है, अरे उल्टा सोच रहे हो। अगर रणवीर सिंह का एक मूवी हिट आ जाए तो दूसरी मूवी में उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज नाउ पीपल एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। अगर रोहित शर्मा एक सेंचुरी मार दे तो दूसरे में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज तो मारेगा ही मारेगा। एक मार के घर पे चले जाने वाले बहुत है, लेकिन उनका नाम नहीं होता। नाम किसका होता है? वो स्टिक ऑन इट। तो सीए बनने के बाद अगर तुम सोच रहे हो ना कि लाइफ वुड बी इजी, नो, यू आर हैविंग सम मिथ इन योर माइंड, बिकॉज वो स्टेज पास करके फिर तुम लाइफ में जा रहे हो या फिर कंपनी में जा रहे हो, तो इससे आगे होगा वो। यहां खत्म नहीं होती जर्नी तुम्हारी। हाँ, अब वो जर्नी तुम्हारी कितनी आसान हो सकती है वो डिपेंड करता है यहां तुमने ये 2 साल जो मेरे पास हो कितना दिमाग ओपन करके चीजों को अंडरस्टैंड किया था, डाइजेस्ट किया था, या तो सुना था, उतनी वहां डिफिकल्टी कम होगी। कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ योर नॉलेज। If I am not having a knowledge, I cannot confidently raise a finger against you and say that yes, you need to think in the way in which I am thinking, because I am confident. Why I am confident? Because I have knowledge. पढ़ाई सब किस लिए कर रहे हैं? सीए में बनने के लिए। सीए में क्यों बनना है? बिकॉज वी नीड मनी एंड वी नीड पावर। Now, rather than working on money and power, work on a knowledge. The power and money will automatically come to you. So these 3 things only, no? But if you are focusing on power and money and not on knowledge, then yes, could be rich, but kind of Ravan. Hello? But you're focusing on knowledge, the power will come, the money will come. There's no doubt about it. You don't just focus on money and just on a power. Focus on this knowledge, because this is something which can give you this. Money have to come if you have a knowledge. And money if coming, then the power. Power is nothing but a recognition. I'm not saying power about killing someone. Power is nothing but a recognition. Recognition means when I enter into the class, the person, or whenever I enter into the company in which you probably will be working, you will stand up and come to meet me. That is a power. Power is not about threatening someone. No, so that power I'm showing. Recognition basically. So if you're working, you're doing CMA just to get a recognition from the society or just to earn money, again your purpose is wrong. Your purpose should be to acquire as much knowledge as you can. And I can bet you, the power and money will follow you. But if you're poor in your knowledge, then the power and money would come to you, but that would be temporary, not permanently. Get it? Moving further to the definition of registered person. So registered person kaun hai? A person who is registered or liable to be registered under section 22 or section 24 of an act. Which act? CGST.
In 22-24 also 3 GST. A registered person means the person, again means a person who is registered under section 25. Section 25 basically is a procedure about how to take a registration. At the end of the section 25, you would be granted a registration certificate. So therefore they are saying section 25. Means a person who is registered under section 25, but it does not include the person who has a unique identity number. Now, what is this unique identity number? Just for a brief, I'm telling you, so that confusion should not be there in your mind. Understand? This foreign embassies in India, well, office which represent their own country. So that could be US embassy, that could be Canada embassy, Australia embassy. सारी country की embassy जो इंडिया में है, वो यूनिवर्सली सभी कंट्री ने अग्री किया है कि जो फॉरेन एम्बेसी होगी उसको हम टैक्स फ्री रखेंगे एज अ पार्ट ऑफ जेस्चर, कि भाई ठीक है, वो जैसे यहाँ पे है वैसे हमारी एम्बेसी भी ये सारी कंट्रीज में है, तो दे विल ट्रीट अस इन द वे इन विच वी आर ट्रीटिंग देम. So this foreign embassy is located in India. When they are purchasing certain goods and services from India, so whatever they are getting with GST. The government का objective, गवर्नमेंट चाहता तो ये ट्रांजेक्शन को एग्जम्प्ट या जीरो रेटेड या नॉन टैक्सेबल कर सकता था, लेकिन उसे दिक्कत क्या होती? दिक्कत ये होती कि गवर्नमेंट को पता नहीं चलता कि कितनी वैल्यू के सप्लाई हमने ये फॉरेन एम्बेसीज को किए, कितना बेनिफिट हमने कंट्री वाइज दिया. अगर किसी ट्रांजेक्शन को मैं नॉन टैक्सेबल एग्जम्प्टेड कर दूं तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा ना ये एग्जम्प्ट क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे तुम्हें एग्जम्पशन नंबर नहीं लिखना है. समझ रहे हो पर्पस? तो गवर्नमेंट ने क्या किया? नहीं, whenever any person is supplying goods or services to this foreign embassy, it would be subject to GST. लेकिन फिर बोले कि यार हमें तो रिलेशन मेंटेन करना है. कि सुनो, ये जो फॉरेन एम्बेसीज हैं उनको हम रजिस्टर नहीं कराएंगे. देखो सारे टैक्सेबल प्रोविजन, सारे वो लोग जो सप्लाई करते हैं दैट इज एग्जम्प्टेड. उनको रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बनाना, क्योंकि अगर रजिस्टर्ड पर्सन बनाया तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. तो इनको कुछ अलग कोड नंबर देते हैं which is known as unique identity number. ठीक है, फिर ये एम्बेसी क्या करेगी? ये यूनिक आइडेंटिटी नंबर से लॉगिन करेगी. उसने जितने भी परचेज किए तो ऑनलाइन दिखेंगे, सारे नंबर लिखा होगा ना, जीएसटी नंबर जैसा ही सेम नंबर होता है ये. तो जितना भी टैक्स का पेमेंट हुआ टू दिस फॉरेन एम्बेसी, मतलब फॉरेन एम्बेसी ने जितना भी परचेज किया जिस पे टैक्स लगा है वो सारे ट्रांजेक्शन दिखेंगे. फिर लॉगिन करके जैसे हमारे 2A में दिख रहे हैं वैसे फॉरेन एम्बेसी के 2A में दिखेंगे. अब जितना भी टैक्स का पैसा ये फॉरेन एम्बेसी ने किया उतना सरकार रिफंड कर देगी उसको, लेकिन इससे उनको पता चलेगा कि कौन सी एम्बेसी ने कितना खरीदा. एम्बेसी कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है ना. दे वुड बी इजीली एबल टू मॉनिटर. Am I clear on this? So registered person के कैटेगरी में नहीं आते. क्यों? क्योंकि उनको आईटीसी नहीं मिलती है, उनको पूरा रिफंड देना ही है, तो उनको रजिस्टर्ड पर्सन में नहीं डालना था, इसलिए उनको अलग नाम दिया. हाँ, क्या? यूनिक आइडेंटिटी नंबर. दे आर नॉट सप्लायर, दे आर नॉट टैक्सेबल पर्सन, आई से दे आर जस्ट बेनिफिशियरी, बट फॉर द पर्पस ऑफ क्वांटिफिकेशन of the benefit which you are giving to you, for a quantification purpose only they are giving this number to you. Automatically whatever is being reflected in your 2A 2B will grant as a refund to you. Am I clear on this now? Yes, sir. Confirm? So this is what we are supposed to do today. In the next lecture we'll start further understanding what is the meaning of business, what is the meaning of goods, what is the meaning of services, what is the meaning of consideration. Clear? Yes, sir. Fine. We'll stop here for the day, and after 15 minutes break, around 9:45, 9:50, again we'll start with the costing.